बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड लर्निंग। स्टूडेंट्स काइंडली अगर आपको मेरे लेक्चर्स वाकई पसंद आते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। अगर किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं आज आपके लिए जो लेक्चर लेकर आई हूँ वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड लर्निंग पैसेज 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा इंट्रोडक्शन को करते हैं। इंटरनेशनली गिफ्टेडनेस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिटरमिन्ड बाय स्कोर ऑन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट नोन एज द आईक्यू टेस्ट which is above a chosen cut-off point usually at around the 20 to 5 C. Children educational environment contributes to the IQ score and the way intelligence is used. For example, a very close positive relation was found when the children's IQ score were compared with their home educational provisions. हम साथ साथ जो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जा रहे हैं। पर बेटर क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशनल बैकअप मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड वर्बल इंट्रैक्शंस बुक्स एंड एक्टिविटीज़ पेरेंट्स, इन सबको हम लोग इसलिए अंडरलाइन करें क्योंकि ये जो है हमारे क्वेश्चन में मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन के पढ़ने के बाद हम लोग जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं हमारे, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स, नाउन्स। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए जल्दी ही ग्रामर का भी 3-4 लेक्चर लेके आऊँ ताकि आप लोग इजीली ग्रामर भी कर सकें, क्योंकि हमारी जितनी भी रीडिंग है वो ग्रामर के ऊपर बेस होती है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाए ज़रा। हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। रीडिंग पैसेज 2 है 6 पैराग्राफ्स। राइट द करेक्ट लेटर A to F इन बॉक्सेस 14 to 17। नोटेबल मतलब एक वर्ड को एक पैराग्राफ आप दोबारा भी लिख सकते हैं। और ये याद रखिएगा जहाँ भी ये लिखा हुआ एक पैराग्राफ दो, मतलब एक पैराग्राफ में दो का आंसर होता है। आर रेफरेंस टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डोमेस्टिक बैकग्राउंड ऑन द गिफ्ट। डोमेस्टिक क्या होता है, होम। अब हम इसमें ढूंढेंगे होम किधर है। अब यहाँ भी हमने फर्स्ट में ही पढ़ लिया था होम एजुकेशनल प्रोविजन। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर हमारा क्या है, ए। A reference to what can be lost if learners are given too much guidance. Lost too much guidance. Too much guidance देखते हैं किधर। अब पैराग्राफ डी देख ले ज़रा। In order to learn by themselves, the gifted children gifted do need some support for their teachers. Teachers who have tendency to over-direct can diminish their gifted pupils' learning autonomy. What can be lost if learners are given too much guidance? Spoon feeding can produce extremely high examination results. These are not always followed by equally impressive results. Too much dependence on the teacher risks loss of autonomy and motivation discover. हमारा आंसर क्या है, डी। A reference to the damaging effects of anxiety. Anxiety हमेशा किधर आता है, जिधर हमारी फीलिंग्स होती हैं। हमने देखना है कि हमारी फीलिंग्स का वर्ड किधर है। यहाँ पे सारे में नो ग्रेट डील अबाउट स्पेसिफिक, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देख ले ज़रा। टू सम ऑफ लर्निंग इज अफेक्टेड बाय इमोशंस बोथ इंडिविजुअल एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। तो हमारा आंसर क्या है, ये एफ। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासरूम टेक्निक्स विच फेवर सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। क्लासरूम टेक्निक्स पैराग्राफ डी ही देख लें। यहाँ पे हमने लर्न टेक्निक्स शुड बी मेजर आउटकम ऑफ द स्कूल एक्सपीरियंस स्पेशली ऑफ द हाईली कॉम्पिटेंट। देयर आर क्वाइट नंबर ऑफ न्यू मेथड्स व्हिच कैन हेल्प सच एज चिल्ड्रन इनिशिएटिव लर्निंग एबिलिटी पीर ट्यूटरिंग। तो हमारा आंसर क्या है इसका, डी। अब यहाँ पे देख लें, हमने दो का आंसर डी में दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि एन बी मतलब जो दो लाइन्स हैं वो एक पैराग्राफ में आ सकती हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 22 पे या 18 to 22 पे आ जाए। हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट पर्सन और पीपल। ए टू ई, लिस्ट ऑफ पीपल। Less time can be spent on exercises with gifted pupils who produce accurate work.
Less time can be spent on exercise with gifted pupils who produce accurate work. ये हम लोगों ने अभी डी में पढ़ा था, तो ये देख लेते हैं ये कहा किसने है। सबसे पहले हम इन सबको अंडरलाइन कर लेते हैं। फ्री मैन किधर है? शोर एंड कमेंसले। यहाँ पे देख ले ज़रा फ्री मैन किधर है। ये फ्री मैन है। फ्री मैन क्या कहता है? The higher the children's IQ score, especially over IQ 1, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interaction with parents, number of books and activities in their home at Freeman. Freeman ने क्या कहा है? Know how to channel their feelings to assist their learning. They very gifted children benefit from support from close relatives. यहाँ पे हमने रिलेशनशिप भी पढ़ा था। यहाँ पे देख लें ज़रा IQ score and they will intelligence used for example a very close positive relationship was found when children's IQ score were with their home educational provisions. तो हमारा आंसर क्या होगा? The very gifted from support from close relatives. इसका आंसर क्या है? ए। इसका शोर एंड कमेंसली ये किधर है? शोर एंड कमेंसली। अच्छा यहाँ पे ना एक हम फीलिंग्स की बात है, ये हमने जो है पढ़ा है लास्ट वाले पैराग्राफ में। यहाँ पे देख लें किसने कहा है, किसने बात की। ये बोकर्ड्स है। तो हम लोग क्या बोकर्ड्स कर दें इसका आंसर? इसको आप डायरेक्टली आंसर दे दें इसका ई। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा शोर एंड कमेंसली ये किधर है? ये शोर एंड कमेंसली फर्स्ट टाइम पे है। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। This happens to such a high degree in some children that they appear to be demonstrating talent. In particular, is overviewing research on the thinking process of highly able children show commensally. Put the instructional problem so if if the gifted merely think more quickly, then we need only teach more quickly. If they barely make fewer errors, they can be shorten the practice. मतलब ये को जल्दी सीख जाते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। शोर एंड कमेंसली is a well tool that helps gifted students reach their goals. Less time can be spent on exercise with gifted pupils who produce accurate work. तो ये हमारा आंसर क्या है इसका? बी। ये देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है? Think more quickly than we need only teach quickly. If they merely make fewer errors than we practice. But of course this is not entirely the case. नेक्स्ट पे आज शोर कमेंट्स के बाद एल शाउट किधर है? एल शाउट सिमेंटन और एल शाउट ये। But scientific progress is not all theoretical knowledge is also vital to outstanding performance. Individuals who knows a great deal about a specific domain will achieve at higher level than those who do not have. Elshout क्या कहता है? Their goals higher level than those who Elshout है। इसको दोबारा पढ़ ले ज़रा। क्या मैं दोबारा? But progress is not all theoretical knowledge is also vital to outstanding performance. Individuals who know a great deal about a specific domain will achieve at higher level than those who do not have. ये क्या है? Really successful students have learned a considerable really successful have learned the amount of their subject. तो हमारा आंसर क्या है? एल शाउट। एल शाउट क्या है? सी। अब हमारा एक ही रह गया है सेल्फ रिलायंस। सिमेंटन को पढ़ ले ज़रा। Researcher will create scientists with cemented him to certain level activities such as independence seem to contribute more to reaching the highest levels of their expertise than those who do not have. तो हमारा आंसर क्या है? सिमेंटन क्या है? डी। इसका आंसर हमने दे दिया डी। समझ आ गया आपको क्वेश्चन के आंसर हमने कैसे दिए?
क्वेश्चन नंबर 23 to 26 है। नो मोर देन टू वर्ड, दो लफ्ज़ों से ज़्यादा आपने नहीं लिखना है। अब यहाँ दो ही लफ्ज़ लिखने हैं। वन स्टडी फाउंड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन चिल्ड्रंस आईक्यू एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड एट होम। अब वापस हम घर पे ही चले जाएंगे, घर का लफ्ज़ एक ही जगह पे मौजूद है। एंड वन स्टडी फाउंड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन चिल्ड्रंस आईक्यू एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड एट होम। अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एट होम पर ऑफ बुक्स एंड एक्टिविटीज इन देयर होम। बुक्स एंड एक्टिविटीज एट होम मतलब इन देयर होम। आंसर हमारा क्या है? बुक्स एंड एक्टिविटीज। बुक्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट पैराग्राफ, children of average ability seem to need more direction from teachers because they do not have dash। प्रेजेंट की बात, children of average ability seem to need more direction from teachers because they do not have। because they do not have students need more direction from teachers। ये देखें, यहाँ पे देखें ज़रा। There appears to be a qualitative difference in the way that intellectually highly able think but with more average ability are older pupils for whom external regulations by the teacher often compensate for lack of internal regulation। lack of internal regulation। Children of average ability seem to need more direction from teachers because they do not have internal regulation। Metacognition involves children understanding their own learning substrates as well as developing learning strategies as well as developing learning strategies। ये है include strategies of planning, monitoring, evaluation, trust what to learn। तो हमारा क्या आंसर है? NS is also part of metacognition। मेटाकोग्निशन का पार्ट क्या है? इमोशनल अवेयरनेस। Teachers who rely on what is known as dash often produce set of impressive grades in class tests। Teachers who rely on what is known as dash, उसको क्या कहते हैं? Although spoon feeding can produce extremely high experimentation, these are not always followed by equally impressive। तो क्या है? स्पून फीडिंग क्या कर सकते हैं? हाँ, impressive results। स्पून फीडिंग। ये था हमारा आज का लेक्चर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर किसी किस्म की किसी भी पैसेज में आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा दूँगी। बहुत शुक्रिया।